स्टार्ट करते हैं। तो गाइस दिस इज आवर फर्स्ट सेशन फॉर सीसेट। तो देखते हैं। 2023 का पेपर था यार। पेपर बहुत टफ था। मैंने भी सेंटर में बैठ के दिया था। तो कोई भी अगर ये बोले कि पेपर आसान था तो वो एक हॉक्स है। पेपर के क्वेश्चंस आसान होना मुश्किल होना बात नहीं रहती है, बट बात ये रहती है कि जब पेपर इस लाइंस पे होता है ना, जो बच्चों को बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं होता, तो पैनिक क्रिएट होता है। 2 घंटे का वो जो पैनिक होता है उसमें परफॉर्मेंस डिग्रेड होती है, क्वालिफाइंग मार्क्स लाने भी मुश्किल हो जाते हैं इस एग्जाम में। पेपर टफ क्यों था उसके रीजंस मेरी तरफ से दूसरे हैं, बीइंग अ सीसेट फैकल्टी। तो मेरे को ऐसा नहीं लगता है पेपर टफ होने में कि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा टफ थे। सारे क्वेश्चंस मतलब सारे लाइक जब मैंने पोल कराया तो आई फाउंड कि लोगों को लग रहा है सिर्फ 5-10 क्वेश्चन ही आसान थे। ऐसा नहीं था, काफी क्वेश्चन आसान थे। बट इज जस्ट दैट कि जो आसान क्वेश्चन होते हैं वो सैंडविच होते हैं मुश्किल क्वेश्चनों के बीच में, तो हम उनको ढूंढ नहीं पाते। पहली चीज वो। दूसरी चीज होती है क्वेश्चन की लैंग्वेज। क्वेश्चन आसान होता है लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज मुश्किल होती है, तो हमको समझ नहीं आता कि इसको अप्रोच कैसे करना है। तीसरी चीज होती है, तो फर्स्ट इज की एक तो कुछ क्वेश्चन तो होते ही टफ है। सम क्वेश्चन आर टफ। ठीक है। दूसरी चीज होती है, अच्छा एक चीज मेरे को बतानी है, ये मीटिंग जूम पे है तो 45 मिनट्स आई गेस चलेगी। और उसके बाद फिर हम एक ब्रेक लेके दूसरा लिंक डाल देंगे। मेरे को इन्फॉर्म करने को बोला था तो मैं बता रहा हूँ पहले। तो एक तो क्वेश्चन ही टफ है। ये पहला केस है जो कि हर साल होता ही था। हर साल सीसैट के पेपर में कुछ क्वेश्चन तो टफ होते ही हैं जिनको हमको छोड़ना होता है। दूसरी चीज होती है कि इस बार जो मेन फर्क आया था वो आया था ये, एक तो क्वेश्चन की लैंग्वेज टफ थी। क्वेश्चन पढ़ के समझ नहीं आ रहा कि इसमें करना क्या है। ये एक चैलेंज था बच्चों के लिए, जो कि सीसैट के पेपर को बाकी एग्जाम से भी ज्यादा टफ बनाता है। सीसैट के पेपर में कैलकुलेशन नहीं होती ज्यादा। एसएससी बैंक में जो मैथ्स और रीजनिंग आती है वो कैलकुलेशन हैवी होती है। वहां पर ट्रिक्स लगती है कैलकुलेशन की, बहुत सारी चीजें होती हैं। सीसैट का पेपर उस तरीके से टफ नहीं होता, बहुत ज्यादा कोई कैलकुलेशन नहीं होती, बहुत ज्यादा मैथ्स नहीं करनी होती हमको। पर क्वेश्चन की लैंग्वेज से हमको भी समझ नहीं आता कि हमको एग्जैक्ट फाइंड क्या करना है। कंफ्यूजिंग लैंग्वेज होती है, थोड़ी सी वेग भी होती है। तो लैंग्वेज टफ होती है, तो इसको लैंग्वेज से इक्वेशन बनाना, क्वेश्चन की इक्वेशन बनाना या क्वेश्चन का डायग्राम बनाना, ये एक टास्क हो जाता है अपने आप में कि क्वेश्चन को डिकोड कैसे किया। लाइक मेंस में नहीं डिकंस्ट्रक्ट करते क्वेश्चन को, तो सीसैट में भी क्वेश्चन को डिकंस्ट्रक्ट करना एक टास्क हो जाता है अपने आप में। तीसरी चीज होती है ऑप्शन टफ होते हैं। ऑप्शन टफ होते हैं। ऑप्शन टफ से मेरा क्या मतलब है, अगर आपने कोई परम्यूटेशन क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, तो 18, 19, 20 और 21 को एक एक ऑप्शन है, ए 18, बी 19, सी 20, डी 21। और एक मैं सेम केस दे रहा हूँ, उसमें ऑप्शन है 18, बी लाइक लेट्स से 24 एंड सी 36 एंड डी इट्स 48। तो अगर आपका आंसर 18 के आसपास 17 16 आ रहा है तो देन यू विल मार्क 18, और वो मोस्ट केसेस में सही होगा। बट ऐसे ऑप्शंस के केसेस में क्या होता है, जो कि इस बार बहुत ज्यादा था, क्लोज जब ऑप्शंस होते हैं ना, तो अगर आपने एक भी केस मिस कर दिया या मिसरीड कर दिया, आप कैलकुलेट कर रहे हो तो गलती से कुछ एरर आ गया, तो उसमें आंसर गलत हो जाता है। उसमें आंसर गलत हो जाता है, जो कि इस बार बहुत ज्यादा हुआ था। और जो एक देखने को मिलता है कि लाइक बहुत सारे इंजीनियर्स हमारे कैट क्लियर करे हुए बंदों को भी सीसैट में एक स्ट्रगल हो गया था। तो वो इन दोनों चीजों की वजह से हुआ था कि लैंग्वेज टफ थी और ऑप्शन टफ थे। ये एक चीज थी। आसान क्वेश्चनों में ये इशू था, और कुछ क्वेश्चन तो थे ही मुश्किल। तो कोई बोले पेपर आसान था तो उनकी बात तो बिल्कुल नहीं सुननी है, पेपर बिल्कुल आसान नहीं था। इसका हम क्या समझे, इससे हम ये समझेंगे कि यूपीएससी चाहती है कि आप सीसैट के लिए अलग से प्रिपेयर करो, क्योंकि वो एक ऐसी बॉडी है जिससे हम कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। वो ही हमसे उम्मीद करेगी, तो वही इस प्रोसेस का पार्ट है। वन साइडेड लव है ये। अगर हम उनसे प्यार करते हैं तो हमको ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम करेंगे कि सीसैट के लिए हमको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो दूसरी चीज है, हाँ। एक मैंने प्रोटेस्ट के केस में बहुत ज्यादा सुना था कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को लेके लोग बहुत ज्यादा बोल रहे थे कि पहले नहीं आता था, इस साल बहुत ज्यादा था। तो ये एक फैक्ट है, इस बार परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन थे, काफी टफ भी थे, उनके ऊपर क्लेम्स भी उठे थे। बट जो मेन मॉन्स्टर जो है, मेन मॉन्स्टर है ना न्यूमरेसी। अगर आप इस पेपर को ढंग से आप देखोगे, जो भी हम डिस्कस करेंगे अभी आके, तो आपको समझेगा कि पीएनसी के आप सारे क्वेश्चन छोड़ भी दो, पीएनसी के सारे क्वेश्चन छोड़ भी दो, तो भी आप रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करके आप कर सकते हो काम। बट न्यूमरेसी समथिंग दैट इज अनअवॉइडेबल। ये अनअवॉइडेबल है मैथ्स में। न्यूमरेसी के एलसीएम से लेकर, न्यूमरेसी में क्या सीन है, न्यूमरेसी में ना बहुत सारे माइक्रो टॉपिक्स हैं। एलसीएम एक अलग टॉपिक है, डिविजिबिलिटी एक अलग टॉपिक है, डिविजिबिलिटी एक अलग टॉपिक है, एलसीएम एक टॉपिक है, उसके अलावा Sir, रिमाइंडर एक टॉपिक है। यस। sir, would you mind talking in English because I don't know. यार मतलब लेट्स कीप इट बाइलिंगुअल। इफ देयर विल बी एनी important information I will convey it in English, but there are some people from Hindi background also, as I was informed. But we don't know Hindi, sir. No, so I will try to keep it in English, but so I will have to explain it in Hindi also sometimes. But no That is fine, important sir. But information. the session is completely in Hindi.
Okay, no. Sorry for that. If the session is completely in Hindi, I have no problem in dealing with English. But actually, what happens? So what I have seen, most of the Hindi medium aspirants are the major victims of CSAT. So that's why I wanted to help them more. But yes, I will try to convey every important information will be conveyed in both Hindi and English. But pardon me if I sometimes switch to Hindi. But no important information will be missed. That I can promise. Okay. That is fine, sir. But yeah, thank you, sir. Okay, no issues. So this is about numeracy. So this is a topic that is a real monster in CSAT and not from this year. If you see the paper of 2022 or 2021, you will find questions from this topic. So what I have done, I will share with you guys. So this is one thing. This is one thing. Now, before starting the discussion, I just want to clear how to prepare for CSAT. Like just a brief outline. Just a brief outline. So what will be the source? So PYQs will be the source again. PYQs will be the source again. Now, how we will do the PYQs? Not for just CSE, not for just CSE. Other exams like CAPF, EPFO, UPSC takes many exams, and this CSE 23 was an exception. Otherwise, the level of difficulty is also same. The level of difficulty is also same for all exams. Mostly, सारे exams में लगभग same सी चीजें आती हैं. Apart, so we can assume that there is a same team that is setting all these papers in UPSC, sitting in UPSC. Secondly, there is a repetition also. Third, we will understand the mind of UPSC. So when you will look at my compilation, so this numeracy has 80 pages compilation. 80 pages, मतलब like not 80 pages. एक page पे there are no not more than 2-3 questions. But this is the biggest compilation in my when you will see my compilation for when I was a teacher. So numeracy had this 80-page compilation from all exams, including CAPF, EPFO, and all. That means UPSC's favorite topic is this, and there is very one logical reason behind this. So see, whenever there is a tough paper, always there are claims and counterclaims. This year the protest was huge, but usually there are many claims and counterclaims against the question paper. But UPSC knows it better than anyone that no one can claim that they have not read numbers. बचपन की फर्स्ट क्लास में हमको नंबर पढ़ाए जाते हैं. नो वन कैन क्लेम दैट दे हैव नेवर read numbers in their entire life. So they try to focus on this topic of numeracy because this is very basic and this can be manipulated so much कि इसका क्वेश्चन कितना भी टफ बन सकता है. They can manipulate this topic to an extent to give toughest questions of all time that they did in year 2023. Okay, so this is the real monster, and I just want to make sure that you note it down today. Like if you want to prepare for CSAT, give at least 15 to 20 minutes of your time to study this topic. Because this is the real monster, and Sir, we lost your voice.
हो गया यार, थैंक्स, अनम्यूट नहीं हो रहा था। कब कितना सुना था यार, कितना मेरे को पता ही नहीं चला यार। आई वाज नॉट अवेयर की आवाज में। एंड कैन समवन इन्फॉर्म कि कुछ मेरे को रिपीट करना है? डू आई नीड टू रिपीट एनीथिंग? Yeah, yeah. I think the first page was the place where we lost you. The last of the first page. So from the second page, if you could start again. Okay, so as I've told you, so let me just give you a brief summary. So this is how the questions are tough. This is the most important topic from this year's CSAT. If you can look, so numeracy, preparing numeracy is like doing Lakshmikant for quality. So there are some two three approach to solve the question. So first is this conceptual clarity that you will have to have for some topics like divisibility. If you know the divisibility rules, then it is easy. Otherwise, it is not. Second thing is this assumption. So for variable kind of questions, you can assume some values and then you perform the calculation. You see how. And third thing is certain kind of common sense, or I would say not common sense, but critical thinking. If you're able to think in that direction, if the thing is clicking you only, then you can solve the question. You see how these things are applied. And for one thing is this diagram. Diagram is for reasoning, mostly reasoning kind of questions. Reasoning. If you are able to draw, for example, if family relations, if you are able to draw this family chart, if you are able to draw this family chart kind of thing, then you will be able to solve the questions. So this is how. So I have broken the CSAT syllabus into four heads based on this thing. So first is this visual reasoning. So for those who are weak in maths and reasoning, so they have to go by this logic. Otherwise, everyone can perform from any direction. So first is this visual reasoning. It does not involve any calculations. It just involves some kind of visual and understanding like directions, family relations, and all those topics. I will give you the list. Second thing is basic numeracy. Again, this is a whole like this is the most important topic of maths. Very easy, but very there are many subtopics like LCM, divisibility, remainder, and all those things. You have to do each and every subtopic to gain clarity. You have to practice it a lot so that you can perform it in exam. आप उसको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा तब वो हो पाएगा. बेसिक न्यूमरेसी के बाद देन यू कैन गो फॉर एनालिटिकल रीजनिंग. Analytical reasoning means calendar and all. So here the question is very easy. It is of reasoning, but some kind of calculation, कुछ calculation required होती है. Some kind of calculation is required, and then you can go for other topics of maths. Other topic of maths include time and work, profit loss, compound interest, permutation combination, any topic that you can keep it for the list. So those who are weak in maths should follow this path. So this is the basic framework for CSAT. For CSAT, let us now discuss. So I will not be discussing reading comprehensions because first of all they were easy this year. If you will see, look at the 2021 paper and 2022 paper. Reading comprehension were quite easy this year. And I have shared this resource called Read Theory. So Read Theory is a resource where you can develop readtheory.com or ORG. I'm not sure, but Read Theory is a website where you can practice these reading comprehensions for free. So it will be a kind of skill development. I will share some hacks regarding these keywords, like these assumptions or best implied on. I will share some hacks regarding these keywords. I have already shared some examples on my channel. You can check that. You can check that. So let us start with this sixth second question. This second question. Uh, am I audible? Hello, am I audible? Okay, thank you, Kanani. Reading comprehension we will deal separately because we have a paucity of time. So let us start with this fourth question. I guess this is of maths. Okay, so now first, so we will go slow. Maybe it may take 2 3 days to complete this paper, but we have to do it because this paper was very tough. So we have to do it with very much conceptual clarity. So we will go slow. We will take each and every question. First, I will tell you how to read a question in actual exam. So Raj has 10 pairs of red, 9 pairs of white, 8 pairs of black shoes. So just leave this information. The character is not important for us. Just so it's like 10 red pairs means 20 red socks. Okay, 10 pairs. See, pairs means 20 red socks and 9 white. 9 white pair means 18 white socks, and 8 pairs of black means 8 black means 16 black socks. Okay, this is the number of socks.
if he randomly picks shoes or socks, okay, so this is shoes, not socks, shoes. If he randomly picks shoes one by one without replacement from box to get a red pair, what is the maximum number of attempt he has to take? See, this is where so this is not, see, people usually mix it with permutation and combination, but this is not permutation and combination. This is known as fundamental principle of counting. This is nothing but counting. This is known as, so this is the basis for permutation and combination. So if it is like the infrastructure of permutation and combination, but this is not real permutation and combination. So this is fundamental principle of counting. So how to find permanent, so how to count. So this is uh, the question where we learn how to count things. See, हमको बहुत कॉमन सेंस की तरह सोचना है, बहुत नॉर्मल तरीके से सोचना है कि वन रेड पेयर मींस रेड, इन 20 पेयर का मतलब क्या होता है, 20 पेयर का मतलब, वन पेयर का मतलब क्या होता है, वन पेयर का मतलब एक लेफ्ट शूज, एक लेफ्ट का शूज, एक राइट का शूज, one right and one left. One pair means one left shoe and one right shoe. Okay, that is the thing. So आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट लिखना है कि कितने निकाले, बट अभी तक भी एक रेड पेयर नहीं आया. सो वी हैव ड्रॉन दीज मच शूज बट देयर इज नो रेड पेयर. सो सपोज आपने 16 पे, सपोज आपने 18 निकाले, 18 शूज निकाले एंड ऑल आर वाइट 18 निकाले, ऑल आर वाइट, अभी तक एक भी रेड नहीं आया. लाइक मैक्सिमम अटेम्प्ट का मतलब बहुत पॉसिबल केस लेके चलना है, वर्स्ट पॉसिबल केस कि सबसे लास्ट में रेड आएगा. दिस इज द कॉमन सेंस. यू हैव टू टेक द वर्स्ट पॉसिबल कि रेड आएगा ही नहीं, मेरी किस्मत इतनी खराब है कि रेड सबसे लास्ट में आएगा. ओके, सो हमने 18 शूज निकाले एंड ऑल आर वाइट. ठीक है, फिर हमने 16 शूज और निकाले एंड ऑल आर ब्लैक. 16 शूज और निकाले एंड ऑल आर ब्लैक. 34, 34 हो गया. नाउ सी, आपने फिर क्या करा, फिर आपने 20 आपके पास रेड शूज थे, बट आपने 10 शूज निकाले, ऑल आर लेफ्ट. आपने 10 शूज निकाले बट ऑल आर लेफ्ट, लेफ्ट फुट, राइट वाला आया ही नहीं अभी तक. तो पेयर तो पूरा नहीं हो रहा. लाइक विदाउट द राइट शू देयर इज नो कंप्लीट पेयर. सो आपने 10 शूज और निकाले एंड ऑल आर लेफ्ट वाले, 44 हो गए. बट नाउ सी, आफ्टर डूइंग दिस 44 अटेम्प्ट्स, आफ्टर डूइंग दिस 44 अटेम्प्ट्स, व्हेनेवर यू विल पिक वन मोर, अब आपने एक और जब ले लिया, so it will definitely will be a red shoe of right leg. It will definitely be a red shoe of right leg. You have gone for the worst possible case. You have gone for the worst possible case, and you have found that after 45 shoes, you will find a complete pair of red shoes. This is how these questions should be dealt. कोई इसमें calculation नहीं है, कोई इसमें formula नहीं लगेगा. There is no formula. Calculation is very easy. 18 plus 16, 34 plus 10, 44. But the amount of critical thinking, amount of common sense that it requires is very huge. Is it understood? Can anyone confirm? The first question, how to read the question. Is it understood? Can anyone confirm? Yes, sir. Anyone else? Okay, thank you. So this is how you will deal with questions. So I didn't take much time. This was an easy question. This was a question that you should take actual exam, but with a very calm mind. इसमें देखो होता क्या. Now I will tell you how these questions are. So 44 and 45 both are in options. 44 and 45 both are in options. 34 के बाद अगर if you will think कि अगले दोनों जो शू आएंगे वो दोनों रेड और लेफ्ट, एक लेफ्ट और राइट हो जाएगा, तो 36 is also in the option. So this is how this question is tough. This question is not tough because of the level of calculation that it requires. This question is tough because of its options. The options are very close, and if you will miss इन एग्जाम लाइक प्रेशर सिचुएशन में क्या होता है कि वी मिस सच डिटेल्स. लाइक हम 44 यहाँ पे आ गया तो हमने एक और ऐड नहीं किया एंड 44 टिक कर दिया. हमने 34 निकालने के बाद वी जस्ट अज्यूम कि अब जो नेक्स्ट टू शूज मिलेंगे वो लेफ्ट और राइट वाला भूल गए हम, और हमने फिर एक पेयर निकाल लिया रेड का. वी थिंक दैट इट इज अ पेयर, बट पेयर लेफ्ट और राइट दोनों का अलग अलग कंप्लीट होना है. So all these things we miss and we answer it wrong. Happens with most of the people. So this requires a calm brain. This requires a calm brain. Just whenever you find such question, just calm yourself, just breathe, and then attempt this question. Do it. Take some time. Don't try to do it fast, because ultimately you will end up gaining 2.5 marks. Ultimately you will gain 2.5 marks out of that. So just give some time and बस critical thinking is okay. I hope you get it. Now, this next question is in how many ways a batsman can score 25 runs by scoring single runs, fours, and sixes only, irrespective of the sequence of the shot. So, everyone has watched cricket. So, those who have watched cricket, they must know that this is the question one should never attempt in actual exam. I will tell you how to do this question. I will tell you how to do this question. But in actual exam, one should never attempt.
because no, not because this is difficult, not because of this is difficult. This is very easy to like conceptually it is very easy. Conceptually it is very easy, but the time it is very time taking. One case, like I will tell you for each and every question. This is time taking. Secondly, look at the options 18, 19, 20, 21. If you will miss just one case, if you will miss just one case out of all the possible cases, you will end up losing marks. You will mark the wrong answer. So this is why these kind of questions should not be attempted in actual exam. But for conceptual clarity, I will tell you how to attempt these. Like, अगर इसका एक easy version आ गया, if it is not for 25 runs, if it is for 10 runs or 8 runs, then it is an easy question. Then there will be less cases. So we can do like I will just show you how to attempt these questions. So let me just get a blank page. Okay. Now see, सबसे पहले क्या है सिंगल्स है हमारे पास we have singles, we have fours, and we have sixes. So let's assume कि हमने सिर्फ singles से 25 runs score करने हैं. So 25 into 1 मतलब like 25 singles लोगे एक केस बनेगा one case. Okay, got it? Now suppose we are doing sixes and ones. एक like assume different batsmen. Assume like Kohli 25 run ऐसे बना रहा है, रोहित शर्मा ऐसे बना रहा है. Different batsmen, different cases. Okay, two score 25 runs. Now one case can be 6 4 24 plus 125. Okay. Now see there can be four sixes, three sixes, two sixes, and one sixes. Like 6 into 3, 18 plus 7 singles, 6 into 2, 12 plus 13 singles, and all those. So there will be four cases like this, four cases. Now suppose we are going for fours and singles, fours and singles. So again it is like 4 6 are 24 plus 125, one case. Similarly 4 into 5 20 plus singles, 4 into 4 16 plus singles. So there will be six cases. So total we have now 11 cases. 11 cases are there. 11 cases are there. Now, what will be the mix? What will be the mix of 6 and 4 and 1? What will be the mix of 6 and 4 and 1? So it can be three sixes and one four, 22 runs and three singles. It can be two sixes and three fours. It can be two sixes, three fours are 12, 12, 12, 24, 24 plus rest you can cover with singles. Just assume कि 24 तक या उससे नीचे तक फोर्स ऑफ से कैसे आया जा सकता है. देन 2 into 4 like 2 fours 8 runs, 2 sixes 12 runs, 20 runs इस तरीके से बन गए रेस्ट सिंगल्स. एंड ऑल दीज पॉसिबल केसेस अगेन टू सिक्सेस के साथ एक सिंगल फोर भी हो सकता है. ओके, और एक सिंगल सिक्स के साथ फोर फोर्स हो सकते हैं. समथिंग लाइक दिस इट कैन हैपन एंड रेस्ट सिंगल्स. ऑल दीज केसेस are possible. All these cases are possible. No, I don't know how many of these are there. It's like I guess four हो गए. And then 4 into 1 भी हो सकता है, 4 into 3 भी हो सकता है. So 4 cases, something like this. Don't go into this calculation. So this will be 4 cases. These will be, I guess, these are 3 cases. 4, 3, 7, 8, 8 cases. 11 and 8, like it's something like 19 cases, but I'm still not sure of the answer because official answer key is not done yet. But I just wanted to show you कि how much of calculation is required. This is a time taking question. करना सिंपल है, बस वंस के केस लेने हैं, 6 और 1 के लेने हैं, 4 और 1 के लेने हैं, 6 4 और 1 के लेने हैं. काउंट करते जाना है. बट काउंटिंग इज नॉट वेरी इजी. इट इज टाइम टेकिंग. दिस इज व्हाट आई वांट टू शो यू. लाइक इस वाले केसेस में भी फिर और केसेस बन रहे हैं ना कि 4 into 4 4 into 3 4 into 2 वाले इस तरीके से वी कैन गो फॉर मेनी केसेस. बट अल्टीमेटली माय आंसर वाज 19 आई गेस. लाइक मैंने एक्चुअली एग्जाम में इसको सॉल्व नहीं किया था टू बी वेरी ऑनेस्ट. घर पे आके सॉल्व किया होगा उस टाइम पे शायद से ये आया होगा. तो दिस इज माय मसल मेमोरी दैट द आंसर वाज अराउंड 90. बट स्टिल द ऑप्शंस आर वेरी क्लोज. तो अगर एक भी ऑप्शन मिस हुआ तो गड़बड़ हो सकती है. सो आई एम स्टिल नॉट श्योर. बट दीस काइंड ऑफ क्वेश्चन यू शुड नॉट अटेम्प्ट इन एक्चुअल एग्जाम. सो आई विल मार्क इट एज अ येलो सर्कल. Got it? Now, this question, sixth question. What is this? There are four letters, four envelopes. Exactly one letter is to be put in exactly one envelope. Okay, so this is an easy question. देखो एक envelope है और एक letter है. एक envelope है. One second.
यार वो म्यूट हो गया था, मैंने like, पापा की कॉल थी, सॉरी। ओके, नो इश्यूज। ओके, सो देयर आर 4 लेटर्स। ओके, सो 4 लेटर्स हैं जो भी है। लेट्स से बनाना नहीं है, माय ड्राइंग इज नॉट दैट गुड। सो L1 L2 L3 L4। ओके, 4 लेटर्स है एंड 4 एनवेलप्स है, लेट्स से ABCD। ओके, नाउ एक लेटर एक एनवेलप में आएगा, एक एनवेलप में इससे ज्यादा लेटर नहीं आएगा। देयर इज एग्जैक्टली वन एनवेलप विद करेक्ट लेटर्स। इफ द लेटर आर randomly inserted. Okay, so now look at the statement. See, these kind of questions are comparatively easy when you have to judge from the statement. So there is no calculation required as such. You just have to find in which possible case the answer can be found. Okay, so do attempt these kind of questions, but with a correct logic plus with some patience. Okay, now it is possible to exactly one letter goes into an incorrect envelope. Now see, just कॉमन सेंसिकली सोचो, 4 लेटर है, 4 एनवेलप है, सपोज एक गलत में चला गया, L2 में चला गया, तो एक गलत में चला गया, इसका मतलब कोई एक और गलत में जाएगा ना। लाइक चलो सी D L4 में जाना था, बट B फिर L1 में। Like if A is in L2 instead of L1, then B will be in L1 instead of L2. So there is no way possible कि एक लेटर एग्जैक्टली एक लेटर गलत हो जाए। अगर एक गलत होगा तो दो गलत होंगे मिनिमम। Getting it? So this is how you will think common sensically. It cannot be true. It cannot be true. So this is not possible. First is not possible. If one letter will be sent by mistake into the wrong envelope, another letter will also be into the wrong envelope by default. Okay. Now second statement. There are only 6 ways in which only 2 letters can go into the correct envelope. Only in which now see 6 ways में 2 लेटर्स की बात कर रहा है ये। टू लेटर्स की बात कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, if someone knows कि basically permutation combination, they can just do it by this 4C2, like 4 letters है, उसमें से 2 correct letters हैं, so 4C2 का जो formula है, so they can use it if someone know permutation and combination. Okay, so it will be like 4 into 2, 4 into 3 into 1 into 2, so it will be 3 into 2, 6. So this is correct. Second statement is correct by permutation and combination. But for those who don't know permutation and combination, let me tell you how to count these things. So suppose L1 के साथ direct चला गया, like just assume कि कौन कौन direct जा सकते हैं. Let's assume the cases. L1 के साथ L2 हो गया, L3 L4 गलत हो गई, L2 L1 के साथ L3 सही चला गया, या फिर L1 के साथ L4 सही चला गया. 3 possible cases with L1. Then one case can be L2 and L3. One case can be L2 and L4. And one possible case can be L3 and L4. Now just count all these things. Just count these things. Now, what I am telling you, this combination is nothing but an extension to an extension is counting. फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का ही एक एक्सटेंशन होता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन कोई अलग नहीं होता। If I'm making my point clear. So this is the formula for this, but for small cases, you can count also. For small cases, you can count also if which 2 letters are getting into the correct envelope. So it can be either L1, L2, L2, L1, L3, L1, L4, or L2, L3, L2, L4, or L3, L4. These are the only possible combinations. So 2 only will be the answer. I hope it is clear. So the language is tough. Not for this question. This question was quite kind of easy, but basic conceptual clarity is needed. But first of all, what is needed is your presence of mind in a paper like CSAT. And I am saying it. It seems very easy. Presence of mind is not a very big thing. But being exhausted after the GS paper, to be present for 2 hours and be concentrate on the paper and solving critical thinking questions like this, it is not an easy task. It is not an easy task. So we have to practice, and we have to practice this way. We have to practice decoding the questions. We have to practice drawing the questions. See what I am doing, what you can infer from my solving, from my solutions of these papers. So I'm not leaving the pen. I'm drawing. I'm writing each and everything. I'm marking each and everything. I'm drawing each and everything. I'm trying to find each and every possible combination to ensure accuracy. Accuracy is must in CSAT. क्योंकि if you are attempting limited questions, if you want to land in a safe zone with limited questions, so you have to be accurate. Accuracy comes with practice first, and second with drawing. आप हर चीज लिख दो पेपर में. Don't leave the space empty. Now see this seventh question. Sir, before This is a sir, repetition of PYQ. sir, I'm sorry to interrupt, but before we Yes. start the next question, because there's only a certain amount of time left, can we end the meeting and start it again?
Yeah, sure. Okay, no issue. So I have given the basics. So now